Hi everyone, welcome to Kitabi Cabins. I am Kritika. I was in Bangalore for Diwali this year और मैं खुली सड़कों का आनंद ले रही थी. I was strolling in HSR layout और वहाँ पे एक बिल्डिंग है called the White House और वहाँ पे अलग अलग exhibitions लगते रहते हैं. Sometimes they sell paintings, textiles, कभी कभी shoes and clothes, ये सब shops लगी हुई होती है. Sometimes there's book fair as well. और मैं वहाँ चल रही थी and I saw this board which said 1 kg books for 500 rupees. किलो के भाव वहाँ किताबें मिल रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं अंदर चली गई एंड आई सी कि वहाँ पे किताबें ही किताबें हैं, तरह तरह की किताबें हैं. तो मैंने वहाँ से कुछ किताबें ली हैं एंड आई वांटेड टू शो देम टू यू. तो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज बिल ब्राइसन, डाउन अंडर. एवरी टाइम आई रीड एनीथिंग बाय बिल ब्राइसन, द ओनली फीलिंग दैट आई एम लेफ्ट विद इज क्यूरियोसिटी. बहुत ही एक जिज्ञासु इंसान होता है ना, हु वांट्स टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग पॉसिबल दैट ही कैन गेट हैंड्स ऑन. ही डज दैट एंड आई लव the feeling of being curious and going into rabbit holes of things and trying to find out कि क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है, नेशन कैसे वर्क करते हैं, बीमारियाँ कौन कौन सी तरह की होती हैं and how do they affect humans or insects etc etc. and he sort of opens the door for all these questions. ये exploration पे निकले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के and he's exploring little towns there, he's meeting locals and he's talking about all the diversity that this continent and country holds. He's also talking about कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों से आप मर सकते हो. Australia can actually turn out to be a very fatal land because there are lots of things that can kill you. Spiders and snakes and jellyfishes, or even the sun can kill you after a point. And he's talked about that in of course, a very witty, humorous way. So I'm really looking forward to this one. The other book that I got, this is Notes from a Big Country. Those who are part of our Chalchitra book community, they know, क्योंकि ये book club पे भी बहुत बार discuss हो चुका है. Rohan Joshi once came on one of the episode and he said, if you're in a bookstore and you see the words Bill Bryson, buy the book. Buy it. Just buy the book. Just buy the book. It doesn't matter what it is. Just buy it. Just buy it. It's great. I promise you a great time. और ये बुक क्लब पे भी लोग बहुत ऐसा बोलते रहते हैं जब भी बिल ब्राइसन की बात होती है. तो आई थिंक आई टुक दैट वेरी सीरियसली और मैंने ले ली ये किताब, नोट्स फ्रॉम अ बिग कंट्री. इट हैज़ वेरी स्नैकेबल, मंचेबल essays, very bite-sized. So Bill Bryson, initially I think he was in America, then he went to Britain, then he again came back to America and maybe that's when he wrote this book. He's writing कि अमेरिका कितनी inventive है but it can also be ineffective equally. People of this country are so proud to be a part of this nation, yet they can also be deeply insecure as a whole country. And he's talking about these dichotomies, these contradictions that the country holds. He's talking about the obsession that Americans have with the drive-thrus, the obsession that they have with the fancy refrigerators. मतलब बहुत ही absurd चीज़ों के बारे में he can go on and on. The other one is guess who? Bill Bryson. Shakespeare. I've had a very good time with Shakespeare. I think my initial interest in reading Shakespeare was the catalyst क्योंकि हमारे 9th class में ना plays होते थे. तो mine was As You Like It and my elder brother had Julius Caesar. Julius Caesar I think was the first play that I ever read. So back in Delhi when I was in college, Barakhamba Road पे there is one British Council of Library and I asked my father to gift me a yearly membership or a library card for my birthday, which he did. उस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर के प्लेस पढ़े. Like I just got obsessed with him. And वहाँ पे ना हर प्ले के बराबर में कुछ छोटी छोटी किताबें रखी होती थी जिसमें प्लेस के बारे में क्वेश्चन आंसर होते थे. इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक क्वेश्चंस यू आस्क मे बी इन अ बुक क्लब और random questions ki what was the motive of Othello when he was saying this, why did Anthony did that or this. Those books made such a huge difference in my reading experience of plays क्योंकि poetry और plays के साथ बहुत बार होता है that the writing feels very distant because it's just a conversational piece of text. लोग बातें कर रहे हैं, there is not much written behind the scenes, there is no motive written for the character. वहाँ पे आपको पूरा एक्सर्प्ट नहीं लिखा है कि इस समय कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा था, बट इट्स यू हु डिराइव एज अ रीडर दैट was the intention. And those books really made a difference in my understanding. I was reading Macbeth and I'm like, oh my god, this sense of ambition, this drive of ambition is so relevant, is so modern today as well. या फिर why was Othello so much jealous, what is the root of that, and all of that literary piece or critics or remarks, whatever discussions were those, really made a difference in that. That's why I'm so excited for this. I think people who want to get into poetry and plays should also read text जो बहुत ही explanatory होता है.
जो आपको समझाएंगे कि कैसे इस पीस ऑफ टेक्स्ट को अप्रोच करना है. सो बिल ब्राइसन इज हियर विद शेक्सपियर, जिसमें पूरी शेक्सपियर की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. वहाँ पूरे बुक हॉल में बहुत सारी बिल ब्राइसन की किताबें थी. वहाँ पे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग भी थी जो मुझे पढ़नी है, बट मैंने नहीं ली. आई विल ओनली गेट दैट बुक वंस I'm done with these 3. Let's keep that as an incentive. The thing is that I'm holding these 3 books by Bill Bryson and you see the diversity right here, right? मतलब ये इंसान एक कॉन्टिनेंट पकड़ लिया है, एक देश पकड़ लिया है, एक इंसान पकड़ लिया है, and he's just like, जिज्ञासु लोग अच्छे होते हैं guys, उनको पढ़ना चाहिए because I think they spark the same level of curiosity within you as well, and he just opens the door. फिर उसके बाद आपको अंदर जाके कौन से कमरे में घुसना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, it's up to you. If you made it till here, thank you so much for being patient, thank you for being curious and interested in this, and thank you so much for being here. I'll see you next time.